Good evening, everyone. A very logical evening. And everyone, welcome. And I should say that I'm very proud that you are doing very well on your mocks. And there is always a scope for improvement. Logical evening, everyone. अब सबके नाम लेती बैठूंगी पूरा सेशन नाम लेने में जाएगा. So, logical evening. And those of you joined now, I'm very proud of you. You're doing very well. Be consistent. गए 2-3 marks में mocks में I see a lot of improvement and there is always scope for more. So you'll have to focus on the consistency of scoring. Now, let's come. This particular session I have focused on uh, the central idea, theme, title, and a couple of inference-based questions. For tones, I'll be, conducting a separate session wherein we'll be dealing with lots of examples, how to identify and all. So today's session is based on this. Okay, Shrishti Dwivedi मैसेज रिट्रैक्ट कर लिया. मीनाक्षी मिश्रा मैसेज रिट्रैक्ट कर लिया. I hope it was nothing offensive. Okay, now are you with me? Are you ready to begin? Please give me a thumbs up if we are ready. Chalo, very good. Now, the easiest way to identify these three is a simple formula, that is the 3 W's. सिंपल है, ठीक है. आपका पहला W हो जाता है. The first question that you need to ask is what. I'll put it this way so that you are able to remember it well. What is the passage on? This is the first question. The answer to this question is going to be, you are able to identify the topic of this particular passage. Fine. So let's assume that this, whatever example that we are taking, this topic talks about consumers behavior. So the second question is, what aspect of consumer behavior is being talked about? So the answer to this question you are going to get is the theme. ठीक है. तीसरा, what does the author say about this particular theme? What does the author
say or opine about the topic or theme. And answer to this question you will get is the central idea. I'm going to go very slow. ठीक है? Uh, Simply because I want everybody to be on the same page. Fine. Are we together on this one? What is the passage on? सबसे पहला question ये topic identify करेगा. दूसरा question कहेगा what aspect of that topic is, because topic या subject जो है वो बहुत बड़ा रहता है. जैसे for example consumer behavior हुआ. ठीक है? So what we have here in terms of consumer behavior, the next question that should be asked is what aspect of consumer behavior it is talking about. So it is talking about consumers decision making. That's the thing. And तीसरा वाला, what does the author say about consumers decision making? Simple उसका जो main idea रहेगा ऐसा निकल के आ जाता है. Fine. We'll discuss that. निकिता हम बात करते हैं उसके बारे में. We'll discuss that right now. Please focus on what we are doing here. अगर आप इसको छोड़ के आप उधर फोकस करोगे तो ये वाला सेशन भी आपके काम का नहीं रहेगा. As in you'll have difficulty in identifying title, central idea or theme. So पहले यहाँ फोकस कर लेते, then we'll discuss the problems that you have. Is that okay? Nikita, Ayush, Devesh? Nikita, please respond quickly. Okay, it seems that Nikita is not responding. Now, I'll talk about the central idea, theme and title जो अभी आ रहे हैं. ठीक है? जहां आपके central idea या theme की बात होती है, right? We are talking about the central idea, theme and title. राइट? अब सेंट्रल आइडिया वाले आप क्वेश्चंस देख रहे हैं तो बड़े स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. इन द सेंस क्या, इन द सेंस कि अगर आपने वो केयरफुली पढ़ा है तो ही आपको वो आंसर मिल पाएगा. किस टाइप की हो रहा है? मान लेते हैं 4 ऑप्शंस है. ए में दिया है अ मेन पॉइंट, सिंपली अ मेन पॉइंट. बी में दिया गया है something that has been mentioned in the passage but that has to do more with the supporting a main point. सी वाला हो जाता है there is an example that has been mentioned, and then I have D which has the main idea. So main idea will include the main point as in the topic or the theme plus what the author is saying about it. अब ज्यादातर जो मेरा एनालिसिस रहा हुआ है आपके परफॉर्मेंस पे, तो मेनी ऑफ यू मार्क मेन पॉइंट एज द आंसर
as in I'll take an example later on, but आपका 2327 मॉक हो चुका है क्या? प्लीज आंसर विथ yes or no. Okay, you are answering yes to what? आप ये आंसर yes किसको कर रहे हैं? Okay, 2327 is done. उसमें एक टाइटल या मेन आइडिया के तो काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, am I right? Now in that case what I am saying is अगर आपके पास 237 2327 रेडी है तो उसको आप सामने लाइए. डू यू हैव इट विथ यू? I'll take out mine. Okay, you have it with you. So there is one question that a lot of students had trouble with, and that is in question number 23. If you have your mocks with you, please come to question number 23. If you are ready with question number 23, please give me a thumbs up because it becomes very difficult to communicate. Absolutely correct. Okay, very good. Now, which of the options is the central theme of the passage? So this was a pretty simple question. Theme क्या है? Right? Theme थी यहाँ पे declining something. So decline of what वाली part होती है? Right? The first question that we had was what? What is the passage on? The passage is on some kind of decline. What aspect of decline is it on? Is it talking about decline of entire thing? अगर हम बात करते हैं डिक्लाइनिंग डेमोक्रेसी, इसका मतलब है डेमोक्रेसी अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है, डेमोक्रेसी सिर्फ नाम के लिए बची हुई है. तो ये पूरा का पूरा डेमोक्रेसी डिक्लाइन नहीं हो रही है. वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी की बात हुई है, दैट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस. सो ये मिल गया मेरे को थीम, और मेरा टाइटल और थीम आर
almost same, right? Title and theme will be pretty close. अगर इसका टाइटल ही देना रहा तो it will have to be something that is related to theme. So I'm sure many of you might have chosen option A, which is declining democracy, because ये declining democracy काफी बार ये word आया है. बट डिक्लाइनिंग डेमोक्रेसी का सिर्फ एक एस्पेक्ट बात किया है. उन्होंने ये नहीं कहा है कि डायरेक्ट डिक्टेटरशिप आ गई है या आ रही है. इट सॉरी, द ऑथर हैज डेफिनेटली टॉक्ड अबाउट हिंदू मेजोरिटेरियन स्टेट. Fine, but the most important aspect that is discussed out here, and that is the focus of the passage, that is the decline in the freedom of press. Now, do you get what I mean by asking these three W's? तीन what's का importance पता चला? Are you with me? Do you agree? इम्पैक्ट ऑफ मोदी लेड गवर्नमेंट. हर्षिल, अगर इम्पैक्ट ऑफ मोदी लेड गवर्नमेंट रहता तो सारे एस्पेक्ट्स पर बात होती है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम ऑफ प्रेस की ही बात हुई है. कहीं ये बोला है लोग बाहर आ जा नहीं सकते, या माइनॉरिटीज को टॉर्चर किया जा रहा है, या एनी काइंड ऑफ एक्यूजेशंस एलिज्ड रॉन्ग डूइंग्स ऑफ मिस्टर मोदी, उनके इम्पैक्ट की बात हुई है क्या? Chalo. Everybody now understands, always ask whenever there is a main idea question, main idea, central idea will be the same thing. So whenever we have main idea or central idea question, theme or title, you need to ask three questions. Pehla wala question, what is the passage on, will help you get to the topic and sometimes directly to the theme. बट अगर सिर्फ टॉपिक पता चला है, थीम नहीं पता चला है, तो आज द सेकेंड डब्ल्यू, सेकेंड व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक इज बीइंग डिस्कस्ड, उससे आपको थीम डेफिनेटली मिल जाएगा. तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द थीम, देयर इज योर सेंट्रल आइडिया. I've just repeated. Harshil, Nipun, Devesh. I hope you got it. Okay. My dear students, I just want to say that I have uploaded a sheet on your in your group. Please download that sheet because that is the sheet we are discussing today. Once you have downloaded, please give me a thumbs up.
Fine. Everybody has the sheet, so let's go and see if we are able to identify central idea, theme or title. चलो, फर्स्ट वाला कह रहा है द ओनली बेनिफिट ऑफ मैसिव इन्वेस्टमेंट in service improvement is that it could be easily described to the customers. अब ये वाला जो है, अब दो चीजें होती है मेरे पास. एक क्वेश्चन आता है द पर्पस ऑफ द पैसेज, why has the author written the passage. दूसरा आता है पर्पस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटेंस, पर्पस ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल. ठीक है, तो इन दोनों में होता है अगर एग्जाम्पल आया है या पर्पस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटेंस आया है, दैट मीन्स वी हैव टू लुक फॉर द पॉइंट दैट द ऑथर हैज टेकन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट और रिटन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट और एग्जाम्पल. ठीक, नाउ अगर पर्पस ऑफ द पैसेज आया है तो द ओनली थिंग दैट आई नीड टू लुक एट इज why has the author written it. Is he trying to describe something, is he trying to provide solution or something. So purpose is something that we are going to cover. So let's focus on this particular question, which is very specific to this particular statement कि ये the only benefit of massive investment in service improvement is that it could be easily described to the customers. ये जो है ये स्टेटमेंट में क्या काम कर रहा है? What is it doing? Is it highlighting the specific advantage of the investment in service improvement? Is it singling out one advantage from the other advantages of service improvement? Or it points out the limited benefit derived from the huge investment in service enhancement? Or it emphasizes that service improvement is the only way to achieve customer satisfaction? Very good. Tell me one thing, those of you mark C, why C is the answer? Yes, very good. अब देखो आंसर झट से मिला. इट इज बिकॉज इट इज फोकसिंग ऑन द ओनली बेनिफिट. मतलब सिर्फ एक ही बेनिफिट है. दैट मीन्स इट इज पॉइंटिंग आउट टू द लिमिटेड बेनिफिट. नाउ आई एम गोइंग बैक एंड ये एग्जाम्पल के थ्रू व्हाट वाज आई ट्राइंग टू से इज दिस. नाउ जहां आपकी बात हो रही है टॉपिक, थीम या सेंट्रल आइडिया आइडेंटिफाई करने की, ये काफी इजी हो जाता है जब आप पैसेज को पढ़ते हैं. और मेरे हिसाब से पैसेज को एक बार में शांति से पूरा पढ़ लो. डोंट ट्राई टू मेमोराइज एनीथिंग. यहां पे मुझे मेमोराइज कुछ नहीं करना, मुझे कुछ याद नहीं रखना, मुझे पैसेज पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए. Okay, the only thing we are doing is to understand the passage. We do not attempt to memorize things. और अगर बहुत सारे फैक्ट्स दिए हैं और अगर आप उनमें अटक कर रह गए
तो आपका रीडिंग बहुत अफेक्ट होगा और उससे बड़ी चीज रहेगी कि आपको पैसेज समझ में नहीं आएगा। दूसरा, बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह रहते हैं तो वैसे भी आप स्ट्रेस में आ जाते हो कि इनको याद रखना है। तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए पढ़ना है। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सबसे इजी तरीका हो जाता है कौन सा फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कौन सी चीज रिपीट हो रही है, सॉरी, रिपीट हो रही है ओवर एंड ओवर एंड ओवर. What is it that is being repeated? So let's go to your question number 27. Sorry, mock CLAT 27 पर जा रहे हैं. That is the one I have here. So that is what we are going to discuss. So come to the passage which talks about humans eating cooked food. And once you have that, please give me a thumbs up. Very good, Charvi. Very good. All of you are there. देखो, अगर मैंने जल्दबाजी में पढ़ा और जो लोग आज तक स्किमिंग पर बैठे हुए हैं उनको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि आपने सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है जिसमें मेंशन किया है कि ह्यूमंस वर नॉट अलोन इन इन आवर यूज ऑफ फायर. इसका मतलब है बाकी के एनिमल्स का भी है. सिर्फ इसके बेसिस पर मैं अगर थीम आइडेंटिफाई करती हूँ या थीम आइडेंटिफाई, टॉपिक तो इजी हो रहा है यूज ऑफ फायर के कॉन्टेक्स्ट में. इट्स एज सिंपल एज दैट. दिस, व्हाट इज दिस पैसेज ऑन? इट इज ऑन यूज ऑफ फायर. Right? Now, what aspect of use of fire it is talking about? It is talking about the specific use of cooking. And what does the author say about cooking? ये आता है आपका आंसर. ठीक, अब देखो, अगर फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, इट इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस नॉट बीइंग अलोन इन द यूज ऑफ फायर. Okay. The Vovo myth illustrates the most important function of fires for humans, that is cooking. अब आया मुद्दा. अब देखो, humans cooking, the cooking human. Cooking is a central aspect of all culture. Cooking made us human. Cooking is a way to pre-digest food. Eating cooked food, cooked carrots, cooked diet, the brains wouldn't have evolved without cooking. जो भी changes है, that is with respect to eating cooked food. It also has an impact. एक और additional point दिया, internal clocks. Now basically कौन सी चीज बार 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 बोली जा रही है? What is it saying? Over and over and over and over. आप जैसे जैसे पैसेजेस देख रहे हो, यहां पे बात हो रही है eating cooked food. यूज ऑफ फायर अग्रीड, बट यहां पे स्पेसिफिक
यूज ऑफ फायर टू कुक फूड वाली बात हो रही है. अग्रीड. व्हाट डज द ऑथर से अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट? दैट वेरी गुड. कुकिंग. कुकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है कुक्ड फूड. यस, वेरी गुड आयुषी. So it is specific to eating cooked food and its impact on humans. है ना, easy है ना everyone? You agree it is easy, it's not all that difficult. Just focus on कौन सी चीज बार 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 ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं. आपकी सेंट्रल आइडिया, आपका थीम वहीं पर मिलेगा आपको. So this one talked about eating or other cooking का context आया. What does the author say about it? The impact of eating cooked food on humans. वेरी गुड. आप यस किसके लिए बोल रहे हो पर? चलो, shall we move ahead now? Yes, Ashi, it's always easy when you apply 3W or you ask the question what is being repeated over and over and over. बार बार कौन से words author use कर रहा है, आपकी central idea, theme, title उसी के आसपास रहेगा. I know, Mehak, what I asked. I was just seeing if everybody is with me or not. Chalo, let's go back and first, is the first example clear, everyone? ये नहीं, एक मिनट, मैं वापस भेज देती हूँ. Okay,
let's go to the next one. That is the second one. It says that Hafer's hypothesis appears to explain the distribution of species as well as the unusual species diversity. The Ice Age refuges would have protected existing species from extinction, but the periodic geographic isolation of related populations. There have been an estimated 13 ice ages to date, would have facilitated the development of new species as existing species on the lowlands adapted to changing climate. एक बार पढ़ लीजिए खुद से आप. Please read it. And once you are done reading, give me a thumbs up. We'll discuss. Okay, let's start off. We are looking at this one. Sorry about that. Okay. Number one question. The author mentions the number of ice ages in the third paragraph in order to. ठीक है, अब थर्ड पैराग्राफ जाने दो, मैंने डायरेक्टली थर्ड पैराग्राफ ही लिया हुआ है. द क्वेश्चन इज व्हाई हैज द ऑथर मेंशन द नंबर ऑफ आइस एजेस. क्यों मेंशन किया है? इज इट टू प्रोवाइड प्रूफ that cooler and drier temperatures were primarily responsible for the distribution of species in the Amazon? Explain how population of species were protected from extinction in the Amazon basin. Explain how most species were able to survive periodic climatic disturbances in the Amazon basin, or suggest that geographical isolation may have occurred often enough to cause high species diversity in the Amazon basin. Okay. Again the same thing. ये अगर number of ice एजेस की बात कर रहा है, इसका मतलब है अपने किसी न किसी पॉइंट के लिए सपोर्ट के लिए यूज कर रहा है. वेरी गुड. सो यहां पे बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज एज वेल एज स्पीशीज डाइवर्सिटी, और इसके पीछे रीजन बताया गया है आइस एज. हेंस आंसर इज गोइंग टू बी डी. नाउ अंडरस्टैंड, प्रोवाइड प्रूफ. अब इस टाइप की चीजों में स्पेशली जहां पर्पस की बात होती है, आपको ये शुरुआत के वर्ड्स पर फोकस करना है. और क्योंकि ये वर्ड चेंज कर दो इसी सेम चीज में मैं प्रूव लिख दूं तो ये आंसर गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ अपीयर हाइपोथेसिस अपीयर्स टू एक्सप्लेन.
ठीक, यहां पे प्रोवाइड प्रूफ, यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेसिस दी गई है, ठीक है। नाउ दिस इज वेयर आई आस्क यू टू बी अ लिटिल केयरफुल कि आप देखो यहां पे पहला वर्ड पर्पस का क्या यूज कर रहा है, टू एनालाइज, टू एक्सप्लेन, टू डिस्क्राइब, टू क्रिटिसाइज, टू यू नो और जो भी वर्ड्स यूज होते हैं, टू नरेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, टू डेमोन्स्ट्रेट. सो प्लीज पे अटेंशन टू द फर्स्ट वर्ड व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफाइंग द पर्पस. मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पे मेरे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. Now we are going to the next one now. Oops a daisy. Okay. Third, read it. Please read it. Whoever this convicted person is, you need to understand that things become easier to understand for you on simpler things. Fine? Now, when I go ahead with the exercise, there will be difficult passages to solve. So it's very easy for you to sit there and criticize, but we know how to go about explaining things. So if you तुमको लग रहा है कि आपको नैनो पढ़ा रहे हैं, you can leave the session. We don't need people to pull down my students. Okay, very good. Let's look at how do I go about answering this question. Some people like to act like things come easy to them. Take Cynthia Proctor for instance. If there's a test tomorrow, she'll say something like, "Oh, I guess I'll watch television tonight." Just to let you know, she ain't thinking about the test. Oh, brother. When I pass her house, she's practicing the scales on the piano over and over. Then in music class, she always lets herself get bumped around so she falls accidentally on purpose onto the piano stool and is so surprised to find herself sitting there that she decides just for fun to try out the old keys. And what do you know? Chopin's waltzes just spring out of her fingertips. A regular prodigy. Absolutely correct. लेट्स लुक इज देयर. अब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर कभी भी, ये सिंपल है आई अग्री, बट कभी भी कंफ्यूजन होता है तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस यू आस्क इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द ऑप्शन. ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग कि अगर पर्पस वाला क्वेश्चन आता है, एलिमिनेट करना रहा तो कैसे करेंगे. ठीक, so this particular thing is talking about friendship. So the question is there friendship even mentioned? मेंशन भी है क्या? नहीं है. एलिमिनेट. Expand on an opinion about artistic interests. Now, is the author opining about artistic interest or is the author opining about what he has observed with respect to Cynthia Parker? So, is he giving an opinion on artistic interests? No.
eliminated. Respond to a challenge about narrator's integrity. यहाँ कहीं भी इंटीग्रिटी की तो बात ही नहीं हुई है. Eliminated. So what is left is D. An observation about a particular behavior. What is a particular behavior that Cynthia pretends as if it comes very easy to her, जबकि वो बहुत प्रैक्टिस करती है. Right? 3. All clear, everyone? A thumbs up, please. Okay, let's go to the next one. Go through this passage and tell me the primary purpose of the passage. Prashanshu, बताया हुआ ही है question. Are you not able to see? Another thing is I've sent the link or rather I've sent the PDF on your group, Telegram group. वहां से download कर लीजिए. Very good. लगता है आपको क्लासरूम में सॉल्व करेक्टली करते आता है, बट जहां आपको एग्जामिनेशन वाले माहौल में बिठा दो, आपका दिमाग काम नहीं करता है या ओवर टाइम काम करता है. बिकॉज यहाँ पे तो बराबर से आंसर दे रहे हो, यू नो विच वन टू पिक, हाउ टू पिक, what goes wrong in the examination hall. Yes, let's go through this. Shakespeare wrote 4 types of plays: histories, comedies, tragedies, and tragicomedies. Right? Some scholars contend that Shakespeare's choice of three of these types of reflects his various psychological states. As a young man making a name for himself in London, he wrote comedies. Then, saddened by the death of his son, he turned to tragedies. Finally, seasoned by life's joys and sorrows, he produced tragic comedies. But a look at the theatre scene of his day reveals, देखो ये मेरा वर्ड है जिसको कहते हैं ट्रांजिशन वर्ड. ट्रांजिशन मतलब ऑथर का सोच कहाँ जा रहा है वो बताता है.
बट किया है इसका मतलब ऑथर उसके कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ बोलने वाला है. सो यहां तक का जो पार्ट है दैट इज अबाउट सम स्कॉलर्स, ये सम स्कॉलर्स का कहना है. और जैसे ही बट लग रहा है तो ये ऑथर का ओपिनियन आया. ठीक. सो क्या कह रहा है ऑथर? It is saying that, but a look at the theatre scene of his day reveals that Shakespeare was not so much writing out of his heart as into his pocket book. Pocket book मतलब पहले जहां नोट वगैरह रखते थे. When comedies were the vogue, he wrote comedies. When tragedies were the rage, he wrote tragedies. And when tragicomedies dominated the stage, he produced tragicomedies. तो ऑथर क्या कर रहा है यहाँ पे? स्कॉलर ऐसे बोल के आए हैं. अब लेकिन अगर आप देखते हो तो उसके जो शेक्सपियर के प्लेस थे वो उस टाइम पर जो चीजें पॉपुलर थी उस हिसाब से बनाता था. क्यों? पैसे के लिए. So let's look at examine Shakespeare's life. होगा नहीं, eliminated. He is contesting. Contest का मतलब ये नहीं होता है कि कंपटीशन हो रही है, वो चैलेंज कर रहा है या उस चीज को डिस्प्रूव कर रहा है. राइट. Explain the terms comedy, tragedy. No, no explanation of the terms have been given. Discuss what is known about Shakespeare's psychological state. Author is saying there is no such thing as a psychological state. It is all simply and simply the reason why he wrote was for money. So ये भी eliminate हो गया. Hence answer is going to be B. Okay, let's see. Hmm. पता नहीं मॉक में क्या हो जाता है. मॉक में आप घबरा जाते हो. मॉक में आप के दिमाग में सीधा चलता रहता है कि टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से आंसर करो. तो जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में आप गलत समझते हो, गलत आंसर मार्क होता है एंड ऑब्वियसली स्कोर नीचे जाता है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज रिमेन काम. अब तक इतने प्रैक्टिस के बाद तो आपको कामनेस कैसे लाना है वो पता ही होगी. आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स दैट एग्जाम के पहले आप अकेले शांति से बैठो. डोंट talk to anyone. Don't discuss anything. स्पेशली तूने ये पढ़ा क्या, तूने वो पढ़ा क्या. सामने वाला बोलेगा हाँ मैंने तो सारा पढ़ लिया, मेरा तो सारा रिवीजन हो गया. और आपने भी पढ़ा है बट आपको उसके कॉन्फिडेंस से लगेगा अरे मैंने तो कुछ नहीं किया इसके कंपैरिजन में. जहां आपका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ that is going to affect your performance. No talking before examination. शांति से बैठो, कोई गाना सुनो तुम. ठीक है. और वो भी थोड़ा सा रिलैक्सिंग वाला गाना. नॉट समथिंग दैट्स गेटिंग यू हाइप्ड अप एक्साइटेड. द मोमेंट यू गेट एक्साइटेड यू टेंड टू लूज योर फोकस. ठीक है. ट्राई दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड वन. मैं तो इतना बोलती हूं कि एग्जाम के बाद भी किसी से पेपर डिस्कस मत करो बिकॉज वो भी आपको स्ट्रेस में डालता है. So, no talking before the paper, no talking about the paper, after the examination. There we go. Meg Gupta says that this silence wala thing has worked for her. Exactly, Anya.
दिव्यांश इज ऑल्सो सेइंग. अब एक चीज समझो, आई डू अग्री दैट देर इज अ जनरेशन गैप, बट हम भी इसी स्ट्रेस से गुजर चुके हैं. और हम जितने भी फैकल्टी जब आपको कोई चीज करने को बोल रहे हैं, ये एक्चुअली एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, और वो एक्सपीरियंस किसी और का सुना सुनाया नहीं है, खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है. Right? So if I say that keep quiet before the mock, don't discuss anything, and above all, पीछे कोई दो चार लोग बात कर रहे हैं कि अरे मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो वो कर लिया, आप वहां से तुरंत उठ जाइए, वो बातें भी सुनने की जरूरत नहीं है. देवेश, आदत लगा लो अलोन बैठने की. अगर आप किसी के साथ बैठोगे आपका कॉन्फिडेंस कम होगा ही. नॉट दैट सामने वाला आपको कुछ कहेगा, बट यू एंड अप कंपेयरिंग योरसेल्फ. आप अपने आप को कंपेयर करोगे ही. इसीलिए कहते हैं अकेले बैठो, शांति रखो, आसपास कोई डिस्कशन भी चल रहा है वहां से उठ जाओ, सुनने की जरूरत नहीं है. अगर आपका कॉन्फिडेंस डिप हुआ, मतलब नीचे गया, तो आपका पूरा ये पेपर पर इफेक्ट होता है, और वो छोटा मोटा इफेक्ट नहीं रहता, काफी बड़ा रहता है. यस, डीप ब्रीदिंग की भी एक्सरसाइजेस बोली है मैंने. इवन दैट इज गोइंग टू हेल्प, एंड दैट हेल्प्स. चलो, लेट्स गो टू द क्वेश्चन 5. प्लीज रीड द पैसेज, आंसर द क्वेश्चन. वेरी गुड. एब्सोल्युटली करेक्ट. अब अगेन द क्वेश्चन, what is the passage on? The first what answer you get is the Balovidza forest, right? What does the author say about it? Author says that it is lush and verdant, age-old oak trees line crystal clear streams. अब देखो उसने कैसे किया है. नो नो, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स ही हैज यूज्ड. ही हैज यूज्ड अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स. लश एंड verdant locale, right? Age old oak trees line crystal clear streams. Naturalists visiting the forest gave its trees nicknames such as the king of and the emperor of for their stately royal appearance. तो क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है, राइट? सो आंसर कैन आइदर, ये निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया. आइदर आंसर कैन बी ए और बी. The point here is there is no such thing as scientific detail. Eliminated. So what is left is B. Very good.
दर्शिका, पैसेज भी क्या समझू? मैं तो समझ ही रही हूँ। आपको कौन से पैसेज में प्रॉब्लम हो रही है, आप बताइए तो। दर्शिका, हम क्लैट 23 टारगेट कर रहे हैं, जो करीब 28-29 डेज में आने वाली है। अगर अभी भी आपको इस टाइप के पैसेजेस समझ नहीं आ रहे हैं तो मुश्किल है फिर, और मुझे चिंता होगी। दर्शिका, अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज आस्क। शैल आई मूव अहेड एवरीवन? कैसे मिला आंसर? क्लियर है? अगर क्लियर है और नेक्स्ट पर जाना है तो गिव मी अ थम्स अप। कोई बात नहीं राम जी, अटेम्प्ट 25 ही हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आप एक्यूरेसी पर भी ध्यान दो। अगर 25 में से 22 23 भी करेक्ट हुए तो दैट विल बी अ गुड स्कोर। चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। We have passage 6. Please read it and then we'll discuss.
Okay. सृष्टि देखो यहाँ दिया गया है ना, दे हैव मेंशन्ड इट हियर, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। अब एक चीज याद रखना, अगर ऑथर कोई टेक्निकल टर्म यूज करता है, वो उसका एक्सप्लेनेशन आसपास दे देता है, तो आप थोड़ा सा केयरफुली पढ़ने की आदत डालिए। ओके, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है ना, फोकस ऑन द क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री विथ? Author of the passage is most likely to agree with. Question बड़ा सिंपल सा है, कौन से ऑप्शन से ऑथर अग्री करेगा? इसका मतलब है मुझे पैसेज की सेंट्रल आइडिया पकड़ में आनी चाहिए। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेंट्रल आइडिया। अगर मुझे सेंट्रल आइडिया समझ में आई है तो आई विल बी एबल टू आंसर दिस वन एज वेल, राइट? Let's go. Under Danish control since 1388, the Faroe Islands have long been governed by the Danish Amtmand, administrator overseer, with the unique armel, Faroes Locting, that is the parliament. So this is unique armel. Now, ये इंटरेस्टिंग रहेगा अगर, या ज्यादा इजी पड़ जाएगा अगर मुझे यूनिक आर्मल का मीनिंग पता होगा। What do you think is the meaning of unicameral? Sorry, cameral. Okay, very good. Locting parliament serving as an advisory body. So अब यहाँ पे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड आ गया है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करेगा कि ये जो फेरोज की पार्लियामेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी, जबकि फेरो आइलैंड्स जो है इसको गवर्न कौन कर रहा था? डैनिश ओवरशियर, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। Niels Winter, Niels Winter was among those who sought a greater role for the Locting. In July 1851, the Faroes
narrowly rejected. The pharaohs rejected. ठीक है? The official candidate and instead chose Winter to represent them in the Danish Folketing. Now, Danish Folketing is the Danish Parliament. So यहाँ से दो clear हो गए हैं. Lofting है, वो है इसका पार्लियामेंट, किसका पार्लियामेंट? फेरोज का. एंड फोकेटिंग जो है दैट इज ऑफ डेन्स. ठीक है, आगे देखते हैं. Winter introduced a bill for Pharaoh's home rule. He introduced a bill for Pharaoh's home rule, but was outmaneuvered by Danish Interior Minister Frederick Tillich. In 1852, Winter started a newspaper in which he criticized the Danish monopoly over Pharaoh's trade in a way the officials found defamatory. He was fined heavily and the newspaper ceased publication. Embittered by the difficulty of getting anything done for the pharaohs, he retired from Folketing. Fine, आगे चलते हैं. Despite its limited political authority, the Lofting, this is the pharaohs ka, became the political platform for the Pharaoh cessation movement. Now, यहाँ पे important रहेगा अगर मुझे cessation का meaning पता चले. What does the word secede mean? And Abhishek, what was your question? Please ask. Abhishek Rathod. Withdrawal. Very good. जैसे Scotland was planning to secede from United Kingdom. So you are a part of it. Now you don't want to be a part of it. आपको withdraw करना. Absolutely correct. Okay. In the next century, the secession movement was not so much a reaction to Danish hegemony as to the threatened demise of Pharaoh's traditions and the rise of a native intelligentsia. ओके, अब देखो, ये सिंपल कहा है, ये मूवमेंट जो था, ये इतना रिएक्शन नहीं था फॉर डैनिश हेजिमनी. इसका मेन रीजन क्या था? बिकॉज ये जो फेरो के लोग थे, उनको लगता था कि उनके ट्रेडिशंस धीरे धीरे कम हो रहे हैं और वहां पे जो नेटिव मतलब जो फेरोज के लोग रहेंगे उनके लिए यूज किया है नेटिव इंटेलिजेंसिया. दैट वुड मीन द इंटेलेक्चुअल्स वाला पार्ट. A consultative referendum was held in September 1946 on the question of secession. The result of the vote was a narrow majority in favor of secession, but the coalition in Lofting कहाँ का है? Pharaohs का है, right? Could not reach agreement on how this outcome should be interpreted and implemented. Because of these irresolvable differences, irresolvable मतलब जिसको solve नहीं कर पाए, the coalition fell apart. A compromise was ultimately reached, however, and the Folketing passed a home rule that went into effect in March
1948। अब ऑथर इनमें से किससे अग्री करेगा? द फेरोज फेल्ट ऑप्रेस्ड बाय द डैनिश, नहीं, या ऑपरेशन नहीं है, यहां पे ध्यान दोगे। सो इट वॉज नॉट सो मच अ रिएक्शन टू डैनिश हेजिमनी, तो हेजिमनी वुड बी एक तरफा राज, तो वो वाला कॉन्टेक्स्ट तो आ नहीं रहा, ये इसी सेंटेंस में दिख रहा है कि ये एलिमिनेट किया जाएगा। बी कहता है सम फेरोज बिलीव दैट द होम रूल लॉ पास बाय द फोकटिंग डिड नॉट गो फार इनफ। देखते हैं, अ यूनिकार्मल गवर्नमेंट इज अ प्रिफर्ड फॉर्म, ये नहीं है, ऑथर ने कहीं भी नहीं कहा है। सो वी हैव नील विंटर वाज एन अनएप्रिशिएटेड हीरो, ये अप्रिशिएटेड था कि नहीं था वो भी मेंशन नहीं है, हेंस आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी बी। क्या क्लियर हुआ ये आंसर कैसे निकला है और ये आंसर सेंट्रल आइडिया से कैसे रिलेटेड है? सेंट्रल आइडिया सिंपल सी बात कह रहा है कि ये जो लॉक्टिंग था वो चाहता था कि फोक्टिंग से अलग हो जाए, तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन पास हो गया, लेकिन ये कैसे इंप्लीमेंट करना लोगों को समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो रेजोल्यूशन या जो कोalition बना था वो पास नहीं कर पाए। अल्टीमेटली क्या हुआ? Voting, that will be basically the Danish parliament, they passed a home rule that went into effect in March 1948। इससे ये इन्फर जरूर कर सकते हैं, सेंट्रल आइडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो बड़ा सिंपल हो जाता है। ऑथर के हिसाब से दिस पर्टिकुलर मेजर वॉज टू लिटिल टू लेट, पहले हो जाना चाहिए था और ज्यादा होना चाहिए था। आप मेरे को एक बात बोलिए, सब लोग मुझे यहाँ पे क्लियर 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 बोलते हैं, बट फिर आप ये सेम वो ही गलतियां कैसे कर लेते हैं मॉक में? हाउ डू यू मैनेज टू commit the same mistakes? Read up more on polity, देवेश, टॉपिक ढूंढ ढूंढ के, आर्टिकल्स ढूंढ ढूंढ के पढ़िए। Okay, seventh, please read the passage, solve the question.
Okay, so we have two kinds of options coming up, A or D. Let's understand. Now it's obviously talking about the first ladies. So यहाँ पे what is the passage on? The passage is on the first ladies. Sorry. मिल गया first ladies? Agreed. Now देखते हैं. Have been remembered because of the ways they have influenced their husbands. Other first ladies have made the history books on their own. So the first two ladies, they influenced their husband. इसका example हो गया. Abigail Fillmore and Eliza Johnson, ये भी how they influence their husband वाला part हो गया. Uh, Again influence male members of the family. How she carried out the duties of presidency. यहाँ तक हो गया. She saved the George Washington portrait. ये और ये अकेली चीज थी तो she remained behind to rescue all by herself. And then there is an example of Eleanor Roosevelt जिसने कि political and social causes किए और उसके बाद she started her humanitarian work in the United Nations. तो agreed, this is talking about first ladies. Now humanitarian work of the first ladies is critical in American government. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया है, दैट इज एलेनोर रूजवेल्ट. और एक एग्जाम्पल के बेसिस पे मेरा आंसर होगा नहीं. यहाँ पे फर्स्ट लेडीज की बात की है और फर्स्ट लेडीज ने क्या किया है उस पर है, राइट. सो फर्स्ट लेडीज हु इन्फ्लुएंस्ड their husbands and made history by themselves. तो ये एलिमिनेट हो गया. डॉली मेडिसिन इज वन एग्जाम्पल, इलेनोर रूजवेल्ट इज वन एग्जाम्पल. सो व्हाट इज लेफ्ट इज डी. The first ladies are important figures in American culture because they influence their husbands, that is, they influence the presidents. They have a big role to play in that area, and other they also or they may also carry out humanitarian works. Okay, Shrashti, मैंने बहुत बार बोला है स्किमिंग स्कैनिंग नहीं करना है बच्चे, नहीं करना है. स्किमिंग से आप करोगे आंसर्स गलत जाएंगे. यू शुड नॉट डू इट. रीड द पैसेज केयरफुली इन वन गो और मेमोराइज नहीं करना है कुछ भी. नो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन वर्क ऑफ द फर्स्ट लेडीज की बात हो रही है. तो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन वर्क तो सिर्फ एक ही का एग्जाम्पल आया है, एलेनोर रूजवेल्ट. बाकी सब तो इन्फ्लुएंसिंग देयर हस्बैंड की बात हुई है. इसका मतलब है दे आर प्रीटी इंपॉर्टेंट. इज इट क्लियर आशी, निपुण, and whoever has answer A? Clear everyone? Please give me a thumbs up so I can go to the next one.
Okay, let's go to the next one. Eighth one. Please read the question. अरे भाई देवेश कानेश मत लड़ो डोंट आर्ग्यू रहने दो लेट सबकी अपनी पेस होती है सबका अपना एक तरीका होता है तो जस्ट लीव इट चलो क्वेश्चन नंबर पैसेज 8 प्लीज Absolutely correct. Everybody has got it. Answer is A. Very well done. No doubts here. Going on to the next one. Please read and solve the passage.
Okay, very good. Answer is D because यहाँ पे अमेरिकन की बात नहीं हो रही है कितना खाते दैट इज नॉट द फोकस इज ऑन पोटैटो व्हाट इज द पैसेज ऑन इट इज ऑन पोटैटो राइट मिल गया आपको टॉपिक व्हाट इज द थीम आप एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे दे हैव टॉक्ड अबाउट द यूएस साउथ अमेरिका में पहले उगाए गए थे देन यू फाइंड द डिसेंडेंट्स इन इक्वाडोर चिली एंडीज माउंटेन नॉर्थ अमेरिका और यूएस में कैसे कैसे यूज होता है सो बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट पोटैटो इन द अमेरिकास so answer is D very well done let's go to the next one 10th one. Okay, now this one is a little on the tougher side. So the first question is, what is the passage on? It is on the Incas or rather यहाँ पे जो specifically बात हुई है ये बात हुई है the Inca Empire, right? What does the author say about Inca Empire? That they were pretty wide and strong. Agreed? And then they got destroyed. Easily conquered the empire and plundered its riches. So Inca Empire के बारे में बात हो रही थी in terms of its engineering, right? And they have a little bit of their engineering या creativity वाला ही context हो रहा है. If I look at it, skillful engineers, they were able to make walls. Then they are talking about artists. Language नहीं थी, accounting का हो गया.
and there was an emperor who used to rule them with an iron hand. फिर Spanish explorers ने सारा खत्म कर दिया. And the question comes, have the Incas disappeared? No. So let's look at it. The Incas once inhabited the ancient city of Machu Picchu. Agreed, but ये आधा है. It is not complete. Because the part here is that it is not just the Incas that are being described, it is the Incan Empire that is being described and how did it end. So this is incomplete. I'll have to remove this. Peru was the primary country of the Incas. That is not the main idea. The Incan empire can be found in Asian cities, okay, and was plundered by the Spanish. Yes, Spanish conqueror destroyed the Incan empire. नहीं, अब देखो D क्यों नहीं हो सकता? Because the focus here is on the Spanish conquerors, while the focus should be on the Incan empire. Is it clear, everyone? Any doubts? Because most of you have answered it incorrectly. लव इसमें क्या एक्सप्लेन करूं मैं ऑप्शन बी में क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको Okay. A is saying the Incas once inhabited, agreed. But अगर आप overall देखोगे, it is talking about the empire of the Incas, not just the Inca people. It is talking about उन वो कितने ग्रेट engineers थे और कितना उनमें creativity थी वो बात हो रही है because it was ruled by an emperor वाला part हुआ और एक नंबर वन एम्परर मारा गया और उसके पहले जो एम्परर का डिसेंडेंट था वो भी मारा गया सो दीज इनकन्स वर लेफ्ट विदाउट एनी रूलर and that is the reason the Spanish could defeat them and plunder or loot everything that was there. Is it clear, everyone? Love, is it clear? Okay. Chalo. This is the last passage that we do. The remaining two you can do yourself. So let's go on to the passage 11. Please read and solve the 5 questions that follow it.
Very good. Answer is C of question number 1. Everybody got it correct. Okay, let's look at question number 12. Very good. Everybody has got the answer correct. Let's go to the next one. Very good. Again, everybody has got it correct. Let's look at question number 4. Very good. Answer is B. Very well done. Very good. Answer is A. Equa is a root for same, and anim is actually for life, and it is said that life is based in the three forms, that is mind, heart, and spirit. So यहाँ पे it has been used for mind. Now let us see if I can infer it from the passage. She is able to face the milkman with equanimity every month, satisfied with her economizing way. क्योंकि आगे बोलता है अगर नहीं रहा तो ही becomes the meanest man. तो अगर इक्वानिमिटी है मतलब बैलेंस्ड है, दैट इज काम है. Now, in the rest of the passage, I just want you to solve the main idea and the title question. So please read 12 and answer the question number 1 of the passage 12. बच्चा what is the question number 13 क्योंकि मेरी नंबरिंग अलग है.
Okay. So, if a person encounters any terrible danger, the change of nature of one, the change of nature one undergoes is equally great. Sometimes fear numbs our senses. Like animals, one stands still, powerless to move a step in fright or to lift a hand in defense of our lives. And sometimes one is seized with panic and again to act more like the inferior animals than rational beings. On the other hand, frequently in case of extreme peril, which cannot be escaped by flight and must be where was I? Yeah, and must be instantly faced, even the most timid men at once, as if by miracle, become possessed of the necessary courage, sharp, quick apprehension, and swift decision. This is a miracle. अब देखो आपका एक वर्ड रिपीट हो रहा है, miracle, miracle, और देखते हैं when confronted with almost certain death, gather resolution from despair, but there can really be no trace of so debilitating a feeling in the person fighting or prepared to fight for dear life. At such times the mind is clearer than it has ever been. The nerves are still. There is nothing felt but a wonderful strength and daring. Looking back at certain perilous moments in my life, I remember them with a kind of joy, not that there was any joyful excitement then, but because they broadened my horizon, lifted me for a time above myself. So let's look at the option. अब द विल टू फाइट वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे फ्लाइट और फाइट दोनों वाली बात हो रही है, तो एलिमिनेट द मिरेकल ऑफ कन्फ्रंटिंग डेंजर, द चेंज ऑफ नेचर लाइकली, करेज एंड पैनिक नो. अब यहाँ पे ऑथर ने चेंज ऑफ नेचर की बात की है, अग्रीड, बट ये चेंज ऑफ नेचर की बात है ना, कि एकदम से मिरेकल हो जाता है कि ये लोग टिमिड मतलब जो कावर्ड रहते हैं, डरपोक रहते हैं, और वो कभी अगर कोई डेंजर आया उसको एस्केप नहीं कर पाते हैं, तो उनमें अचानक से काफी करेज आ जाता है. So the change of nature that the author has talked about is what he is calling as miracle, and he has gone on to explain that he has experienced it himself. Hence answer is going to be B. So let's look at कैसे होगा. What is the passage on? It is on facing danger or perilous situation. So perils, right? Second, what does the author say about it? Author says that facing danger or perils leads to a change in nature. अब ये सिंपली चेंज इन नेचर के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं किया, ऑथर ने इसके बारे में बहुत पॉजिटिवली यूज किया है. So if I look at it, the author is talking about change in nature as something being very good, राइट. सो सिंपली चेंज ऑफ नेचर जो है वो आधा हो जाएगा, तो मुझे इस चेंज ऑफ नेचर के साथ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कॉनोटेशन लगाने की जरूरत है. हेंस आंसर इज गोइंग टू बी बी. And the last question we are going to do is passage 13. And I want you to solve the first question.
Okay, that's your passage. No, Suhani, we don't have the time for that. We'll discuss it in the next session. Please try and solve it on your own. हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट सेशन जब टोन करेंगे उसके पहले ये डिस्कस कर लेंगे. But try and answer it yourself. But we'll definitely discuss. And Devesh, आपके अभी क्वेश्चन तब डिस्कस कर लेंगे. So 13th में बात हो रही है. What is the passage on? Let's start with this. The first question, what it is, the passage is on the European zoos, right? What does the author say about the European zoos? That जो भी animals थे, the animals were number one exotic animals, and the zoos displayed them in the background of their native place. So exotic animals were exhibited against the backdrop of their native homes. Simple. यहाँ आ गया मेरा passage. Sorry, main idea. So let's look at the part. Buildings in the late 19th and early 20th century European zoos emphasize the exotic origins of the animals they house. Lag raha hai, but we'll need to eliminate other options. Many buildings in the late 19th and early 20th centuries, many buildings were built to resemble. Many buildings were built to resemble. No. Only Egyptian temples? No. European zoos in the late 19th and earlier century sought to evoke subtle emotions in their visitors. कोई subtle emotions की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. ऑथर तो ने यहाँ पे कहा है there was no home for subtlety, मतलब कोई subtlety थी ही नहीं. तो ये गलत हो गया यहाँ पे. He says during the late 19th and early 20th century, most of the animals in the zoos came from outside of Europe. Agreed, but what is more important out here is उनको कैसे exhibit किया गया था. So this is incomplete. If it is incomplete, this is not my main idea or central idea. Hence, answer is going to be A. Now, that is it so far. And remaining questions, please solve. We'll discuss it the next time in the next session we meet. Try and solve करिए खुद से समझ कर करिए. The rest of you who have anxiety in exams, please start the breathing exercises. Simple है, deep breathing करिए. आप जब एग्जाम रूम में बैठते हैं, मॉक देते हैं, आप जब भी बैठते हैं बात नहीं करना है, आंखें बंद करना है और फोकस करो अपने ब्रीदिंग पर. और डीप ब्रीदिंग लो, और ऐसे भी नहीं है कि आवाज कर करके ले रहे हो. Simply focus on your breathing. That will help you concentrate. That will help you focus. Now tell me honestly, was the session helpful to you?
Please answer with yes or no. I'm waiting for your response with respect to was it helpful or not. If it is not helpful, then no sense in wasting your time. Okay, it was helpful. ठीक है चलो till the time we meet again everybody stay calm keep focus and happy learning thank you all